आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एसक्यूएल में यूज़र नया बना सकते हैं और नए यूज़र को किस तरीके से राइट्स दिए जाते हैं। एक यूज़र दूसरे यूज़र के अगर किसी टेबल्स को या डेटा को एक्सेस करना है, डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करता है वो स्विचिंग हम देखेंगे। क्वेरी जो भी एग्जीक्यूट हम करते हैं यहाँ एसक्यूएल में, अगर हम उसको सेव करके रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, और फिर फर्दर फ्यूचर में अगर हम उसे वापस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो किस तरीके करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली आज से अब हम समझते हैं कि कैसे हम इसमें यूज़र बनाएंगे और कैसे वो यूज़र जो है अपने राइट्स का इस्तेमाल करेगा, कैसे उसको राइट्स असाइन होंगे, परमिशंस ग्रांट करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वो इस वर्जन में सिस्टम यूज़र नेम है, पासवर्ड इज़ मैनेजर, और स्कॉट जो है वो एक यूज़र है। सो वी आर लॉगिंग एंड एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक यूज़र क्रिएट कर सकता है, मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकता है, बट ए यूज़र कैन नॉट क्रिएट अनदर यूज़र। सो वी आर लॉग इन दिस सिस्टम with the password of username password. Username is system and password is manager. System and password is MANAGER, manager. Okay. So we are now logging with the system manager in an Oracle 9i Enterprise Edition version of the Oracle. Here we are going to create a new user. The command is create user. Username is Amit C, identified by India. Default table space is users. Temporary table space is temp. Quota unlimited on users. यहाँ पर हमने एक नया यूज़र बनाया है अमित सी के नाम से, पासवर्ड है उसका इंडिया। उसको टेबल स्पेस वेयर द डेटा विल स्टोर ऑफ दिस यूज़र इज द यूजर्स इन Oracle 9i वर्जन, एंड टेम्परेरी टेबल स्पेस इज टेम्प, एंड कोटा अनलिमिटेड दिया है, जितना भी आप इसके अंदर डेटा आप रखना चाहें रख सकते हैं। एंड विद दिस कमांड ए न्यू यूज़र इज क्रिएटेड. At present, this user doesn't have any permission to do in this environment, so we will grant some permissions to this user. So these privileges can be given with the command grant, create session, create table, create view, create procedure to C. So this user is now exist and having the permission of create session, create table, create view and create procedure. Now अब हम देखेंगे कि ये यूज़र यहाँ परफॉर्म कैसे करेगा। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि लॉग आउट करके फिर लॉग इन करें। यहीं से कमांड है कनेक्ट, जिसके थ्रू हम एक नए यूज़र को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले से हमारा बना हुआ यूज़र था स्कॉट टाइगर, तो स्कॉट पे अगर आपको लॉग इन करना है तो स्कॉट टाइगर यहीं से हम लॉग इन कर सकते हैं, कनेक्ट हो गए। और इसकी यहाँ पर अगर आप टेबल्स देखना चाहें तो हम यहाँ पर देख सकते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, यहाँ जितनी भी इसके अंदर पहले से टेबल्स बनी हुई हैं ये हम देख सकते हैं। एक यहाँ पर टेबल है EMP, जिसका मैं स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, we may change the line size of existing environment. So for that
set line size 120, default is 80, and now we are again executing that command for viewing the data of EMP table. This is the EMP table, and this is the user Scott who is working. Now we are going to log in with the created new user. Connect Amit C India, username / password, connected. Now the Amit C user wants to access the data of the table of Scott user EMP. So Scott should first give the permission to Amit C user for accessing the data of EMP table. For that, we should log in into the Scott again with the password tiger. Now Scott is giving the permission, grant, select on EMP to यूज़र नेम, जिसको वो परमिशन दे रहा है अमित सी, ग्रांट सक्सीड हो गई है। तो अब अमित सी यूज़र में लॉगिन करेंगे हम और देखेंगे कि वो एक्सेस कर पा रहा है इसको या नहीं कर पा रहा है। तो अमित सी /India, we are connected, so select star from EMP. There is an error because Amit C is trying to access the data of EMP, but यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करा हुआ है कि ये EMP टेबल अमित सी की खुद की है या फिर स्कॉट की है, क्योंकि वो एक्सेस कर सकता है स्कॉट की टेबल को और अमित सी यूजर में अभी कोई टेबल नहीं है इस तरीके की। तो वी हैव टू क्वालिफाई द नेम ऑफ द टेबल विद द नेम ऑफ द यूजर। यहाँ पे आगे यूजर नेम उस टेबल की लगा करके हमने क्वालिफाई करने की कोशिश करी है कि जो अमित सी यूजर था जिसमें हम लॉगिन थे वो स्कॉट की टेबल को एक्सेस करे, ऐसी हमने परमिशन दी। अभी ये एक्सेस कर सकता है। वी कैन ऑल्सो क्रिएट ए न्यू टेबल विद द डेटा ऑफ द स्कॉट्स EMP टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम create table EMP1. Say this table is in the Amit C user as select star from Scott EMP. Table is created. Now this EMP table is stored in Amit C user. So we will try to access the data of EMP1 table. And there is only one table in the Amit C user. Table is created. Amit C have accessed the table of Scott user. So this all we done through user handlers, user management. Now I will tell you another thing. How can you save a query without storing the data, and how we can access that query or execute directly from the saved file. So there is a command save that will save the previous query, last executed query. Like if I have accessed, fired a query here
from EMP, where EMP1, where rename, where salary is greater than 3000. That query we can save in a file with the command save. Say for example, I will create a folder in the D query. There is no file at present. We will save this with the extension of SQL. Now file is created, and we can see that file from outside of the SQL environment. This is the file. This is the query. This is the query we have filed there, and it is saved properly in the file q1.sql that is stored in the D drive of the query folder. Now if we want to execute directly that query, put @ sign with the address of the query that we want to execute, q1.sql, the file is executed. And if you want to store the query with the output, then there is a command spool. That spooled file is a txt extension file. Like if we are starting the spooling, so q2.txt, this is the file we have created for spooling the further executed D1. Because this is with the data, so the extension of this file is txt. Now if we execute select star from tab, the output is this. Then if we give command select star from emp1, then the output is this. And we want to stop now the spooling, so we give the command spool off. So after stopping the spooling, we can see the file that it has the data or not. So this is the text file, and we can see here this is the commands that we execute during that till we have off the spooling. So this all we can do here.